Continuing with the electrochemistry, now next question is, what are the differences between EMF and potential difference of the cell? So what is EMF? Electromotive force, and potential difference. It is the maximum voltage obtainable from a electrochemical cell. It is less than maximum. So it is the difference between anode cathode and anode anode when cell is not sending any current. It is the difference of anode cathode and anode when current is flowing through the circuit. EMF, it is measured with potentiometer, while potential difference is measured through voltmeter. So these are the few point of differences. It is responsible for flow of steady current. करंट जो है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, स्टडी करंट. It is not responsible for flow of steady current. So these are the point of differences between EMF and potential difference of the cell. When we come to other question, what is dry cell? इसकी वर्किंग कैसे है और ये इसकी सेल वोल्टेज कितनी होती है. तो ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए zinc container containing the paste of MnO2 and ammonium chloride. So question is, what is dry cell? Answer, it consists of a zinc container containing paste of MnO2 and ammonium chloride. MnO2 ammonium chloride का इसमें पेस्ट होता है with little of the ZnCl2. अंडर वाटर ये पेस्ट जो है वाटर में बनाया जाता है. The cell reaction is, zinc first of all loses electron. This reaction is called as oxidation half reaction. These electrons, they are taken by MnO2 in the presence of ammonium ions. They will give you Mn2O3 plus H2O plus 2 ammonia. These ammonia molecule, they combine with zinc ion to give you diamine zinc complex.
cell voltage in this case is 1.5 volts. Each cell contributes 1.5 volt. To get maximum output of 6 volt, such 4 cells they are combined in a series to get output of 6 volts. The drawback of this cell is that the ammonia so produced during the cell reaction, this is a reduction half reaction. So ammonia so produced during reduction half reaction, this ammonia attacks the zinc container, and zinc container develops some holes after some time, and the paste of the zinc chloride, ammonium chloride that starts leaking. It can spoil our इक्विपमेंट, ये हमारे इक्विपमेंट को ख़राब भी कर सकता है. तो इसलिए इन सेल्स को ये एडवाइजेबल है, व्हेन देयर इक्विपमेंट इज़ नॉट इन यूज, दीज सेल्स शुड बी पुट आउटसाइड ऑफ दैट इक्विपमेंट, उनको बाहर निकाल के रख देना चाहिए. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, राइट नर्नेस्ट इक्वेशन for following redox reaction. Two Cr plus 3 Cd2 positive. Reaction is 2 Cr3 positive plus 3 Cd. इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना है. Nernst equation is the equation which is used to find out the EMF of the cell under non-standard condition. If your cells are not working under at 298 Kelvin, they are not working, and when molar concentration of electrolyte is 1 molar, and if gaseous electrodes are involved, the gases are not used at 1 atmospheric pressure. These conditions are called as non-standard conditions. So if cell is working under non-standard condition, to correct the value of EMF, we use the Nernst equation. So according to Nernst equation, EMF of this cell will be equal to EMF standard plus 0.059 upon n. If you are using plus sign here, then log of concentration of CD, n is 6 electrons here, so you will be doing 6 here, and then log of cation, cathode will be on the upper side. This is cathode, so concentration of CD2 positive raised to power 3 Cr raised to power 2. So this is the way how to use to calculate EMF of such kind of cell. So this equation is to be solved. We must know the concentration of chromium ions and concentration of cadmium ion. If you are using negative sign here, then this anodic ion will come upper side and cathodic ion will come on the lower side. So this is the equation to calculate EMF of this cell which is not working under standard conditions. Then we have the next very important law from electrochemistry, that is what is Kohlrausch's law and what are its application. Kohlrausch's law is very important law from examination point of view, क्योंकि 12th में इस लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. तो वी मस्ट नो द डिटेल ऑफ दिस लॉ. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कोहलरॉस लॉ. गिव इट्स एप्लीकेशन. इसकी आपको कम से कम 3 एप्लीकेशन आपको. So what is Kohlrausch's law? This law states that at infinite dilution, when dissociation of the electrolyte is complete, जब उसकी dissociation electrolyte की complete होती है, each ion makes definite contribution toward the total conductance of the electrolyte. At that moment, the total conductance of the sparingly soluble electrolyte is equal to the sum of the conductances due to all cations and anions produced by 1 mole of the electrolyte in the dilute solution. So this is the definition of this law. Inverted commas we will say at infinite dilution, the total conductance of an electrolyte
is equal to the sum of the conductances of all ions, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, produced by 1 mole of the electrolyte. For example, let us have a electrolyte AXBY. When it ionizes in water, it produces X. A charge is Y and YB charge is X. Now, total conductance of this electrolyte lambda m of AXBY, this should be equal to lambda of A Y positive ion multiplied by X number, and lambda of B X negative ions multiplied by Y. So this is the formula in terms of Colruy's law. Now what are the applications of this law? First is, with the help of this law we can determine the conductance of weak electrolyte. We can determine the lambda m molar conductance of weak electrolyte where experimental determination is not possible. जहाँ पे experimental determination possible नहीं है. For example, given molar conductance of sodium acetate is given to us, molar conductance of your sodium chloride is given to us, molar conductance of HCl is given to us. जब आपको ये 3 मोलर कंडक्टेंस दी गई है, you have to calculate the molar conductance of sodium एसिटिक एसिड. अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की निकालनी है तो आपने क्या करना है, इन दोनों कंडक्टेंस को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसीटेट आयन है, यहाँ H पॉजिटिव है. एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस जो होगी दैट विल बी द सम ऑफ कंडक्टेंस ड्यू टू एसीटेट आयन एज वेल एज H पॉजिटिव आयन. तो इन दोनों को जोड़ के ये सबट्रैक्ट कीजिएगा, क्लोराइड से क्लोराइड कट जाएगा, सोडियम से सोडियम कट जाएगा, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन की जो टोटल कंडक्टेंस होगी दैट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड. सो यू कैन से लैम्डा m और एसिटिक एसिड अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी लैम्डा ऑफ सोडियम एसीटेट, m मोलर डाल रहे हैं, प्लस लैम्डा m ऑफ HCl minus lambda m of NaCl. So this will be your answer. So this law helps us to calculate molar conductance of weak electrolytes where experimental determinations are not possible because weak electrolyte does not ionize completely. अगर हम ग्राफ भी इसमें प्लॉट करें that will never meet ordinate, तो वो उसके पैरेलली ग्राफ चलता रहता है, इसलिए वहाँ डिटर्मिनेशन मुश्किल होता है. दूसरा हम करते हैं, it helps us to calculate degree of dissociation, कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने % या कितना डिसोसिएट हुआ है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इसको जानने के लिए हमें अल्फा बराबर है लैम्डा MC, किसी भी कंसंट्रेशन पे कितनी कंडक्टेंस है और इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितनी है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर परसेंटेज अल्फा निकालना है तो इसको फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है. दिस विल बी योर परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. थर्ड है, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt. Salt की solubility कितनी है? This is given by specific conductance multiplied by 1000 upon molar conductance of that electrolyte. तो यहाँ से आप solubility निकाल सकते हैं sparingly soluble salt की. So this law is very important. This law is very important for calculation of solubility. We can also calculate molar conductance. In that case, the solubility or molarity of the solution will go down. तो इस तरह से हम ये calculations कर सकते हैं. This is very important law from the examination point of view.
Then we have what is the relationship between molar conductance and equivalent conductance. So before giving the relationship between these two, let us first define molar conductance and equivalent conductance. Molar conductance is the conducting power of all the ions which are produced by 1 mole of the electrolyte. अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लिया जाए और उसको बहुत डिल्यूट सोल्यूशन में या 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया जाए तो उससे जो कंडक्टिंग पावर होगी सभी आयंस की, दैट इज मोलर कंडक्टेंस. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन lambda m and lambda equivalent conductance? So we can say molar conductance is the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte in large excess of solvent. Or that is 1 liter for comparison purposes. So now lambda m will be equal to kappa into 1000 upon c gram mole. This is also given it by 1000 upon molarity of solution. Molarity is capital M. Then we have lambda equivalent conductance. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सिर्फ 1 ग्राम मोल की जगह आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, बाकी डेफिनेशन वही है. सो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट. लैम्डा इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू kappa into 1000 upon c gram equivalent, or this is kappa into 1000 upon normality. This is equation number 1. This is 2 dividing 1 by 2. We get lambda m is upon lambda e cube, that is equal to normality upon molarity. So this is very important relationship between molar conductance and equivalent conductance. Then we come to a very important question. Can nickel spatula निकल का एक तरह से कड़छा या स्पून बड़ा be used to shake copper sulfate solution. अब निकल जो है न्यूट्रल मेटल है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने E नॉट ऑफ आयनिक फेज, ये कैथोड बनने वाला है, तो आयनिक फेज माइनस E नॉट ऑफ न्यूट्रल मेटल. आयनिक फेज का E नॉट वैल्यू है 0.34 प्लस होती है, निकल की माइनस 0.25 है. इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 0.59 प्लस. सिंस नेट E नॉट, ये नेट E नॉट इनमें निकाला जाता है जब सेल नहीं होते, EMF नहीं कहते यहाँ पे. नेट E नॉट इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन यहाँ संभव है. Therefore, nickel spatula should not be used to stir, पिलाने के लिए, to stir copper sulfate solution. So these are the 6 important questions for this lecture. Next time we'll take some other important questions.